Even if you don't know the name Vashu Bhagnani, there's a good chance that as a 90s kid, the films he produced via his banner Pooja Entertainment were a big part of your childhood. Hits like Coolie number 1, Hero number 1, बीवी number 1, प्यार किया तो डरना क्या and बड़े मियां छोटे मियां. मगर उसके बाद आया फ्लॉप्स का एक ऐसा सिलसिला जो आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा है. You don't have to be a film analyst to notice that Vashu Bhagnani hasn't had a decent hit in the past 24 years. With most of his films turning out to be major box office disasters. To make matters worse, Pooja Entertainment faced 3 high-budget box office bombs starring none other than Akshay Kumar in Bell Bottom, Mission Raniganj and the Bade Miyan Chote Miyan reboot. With many reports citing Akshay Kumar's per-film fees as ranging anywhere between rupees 60 to 80 crore, it's no small setback to recover from. However, it still came as a shocker when recently Pooja Entertainment's alleged ex-employees took to social media to complain about non-payment of dues from the company's end. And what came as an even bigger shocker were reports of Vashu Bhagnani selling off his 7-story Mumbai office to settle debts to the tune of rupees 250 crore. Rumors ये भी उड़े कि the building has been sold off to a prominent builder under the garb of redevelopment. मगर अब खुद वाशु भगनानी ने इन rumors को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ दी है. In an interview with ANI, Bhagnani claimed that the allegations were false before adding that he still owns the building. अब वो बिल्डिंग में मैं बेच रहा हूँ नहीं बेच रहा हूँ 250 करोड़ का है कि 200 करोड़ का है. हाउ कैन समबडी जस्ट से इट लाइक दिस एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स एलिगेशन. बिल्डिंग आज भी मेरी है. He also revealed that he was actually planning to extend the building into a beautiful 15-storied luxury tower and name it Pooja Luminaire, and added that he was also planning to make a mini India in UK, but people, instead of being appreciative, are spoiling his name. और मैंने कम से कम 300 से 400 लोग इंडिया से लेके आया, सबको इधर फ्लाइट में घुमाया, खिलाया पिलाया, छुट्टियां दी, पैसे दिए, प्लस मैं मेरे यहाँ के जो इंडियन भाई लोग हैं उनको मैंने काम दिया है. तो 500-600 लोगों को मैंने बिजनेस दिया एक दिन में. तो आई हैव शॉट दैट मूवी फॉर ऑलमोस्ट 60-70 डेज. 25 से 30 हज़ार आदमी को मैंने जॉब दिया है. तो पीपल शुड अप्रिशिएट. एप्रिशिएशन है ही नहीं. He also said that the reports of layoffs in the company are absolutely baseless. सवाल ही नहीं पर कैसे निकालूंगा. काम करना है ना. विदाउट एम्प्लॉय तो मैं काम ही नहीं कर सकता. मैं काम बंद कर दूं तो अलग बात है, डेफिनेटली निकालूंगा. फिर क्यों रखूंगा? बिकॉज आई एम अ बिजनेसमैन. Speaking of legal action against people accusing him of non-payment of dues, Bhagnani said that his legal team will make sure that they learn a small lesson. Yes, मेरी एक लीगल टीम है जो कुछ लोगों को डेफिनेटली थोड़ा सबक सिखाएगी. He concluded by saying that he is not a beggar but a proper businessman who is financially very stable. आज मैं अपनी फैमिली को लेके क्रूज में जा रहा हूं तो भी लोगों को तकलीफ है. अरे मैं कोई बेगर हूं? आई एम वाशु भगनानी यार. मैं बिल्डर हूं, मैं फिल्म मेकर हूं, मुझे 50 IP का मैं मालिक हूं. आज मैं दुनिया को लेके घूमता हूं, मैं जा रहा हूं, लोगों को तकलीफ हो रही है. चलिए, now that you have cleared your part, Mr. Bhagnani, it will be interesting to see how things unfold from here. Watch this space for more and make sure to subscribe to Shosha for your daily dose of entertainment.